Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss the JEE Mains 2024 PYQ. The chapter name will be Electrostatics and Gauss law. If you see the Gauss law, electrostatics and the Gauss law, it's a very lengthy chapter. Plenty of formulas, some very tough concepts are there, easy concepts are there. What to remember? So you can give the maximum priority first for point charges, next dipole, and basic Gauss law. These are things. And compulsory what when you try to revise formula. E bar due to all bodies. Remember all formulas. V due to all bodies. So these things are compulsory, which you have to remember things. So one must know the electric field due to all the bodies, potential due to all the bodies. These are the make it memorize. Definitely, you can do better very easily in exams. So as I explained, okay, then I'll be giving you the basic ideas how to deal with this chapter, rather than blindly bluffing things. As and when problem comes, what to remember, how to remember, I'll give the tips. We'll start with the first question. I have this the distance between the charges plus q minus q is 2l. Okay, this is the one. We'll make one dipole. Then we are having the 2q and minus 2q. The length is 4l. This is another dipole. It's asking the electrostatic potential at point P. And this is a distance r given. And this is 60 degree. Okay, will manage in Hindi because most of them are not comfortable with English. यहाँ पे हमें चार पॉइंट चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज. इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12 दे चुके हैं. और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज -2q + 2q ए भी डाइपोल बनेगा. तो यहाँ पे हम चार पॉइंट चार्ज या दो डाइपोल है. इस दो डाइपोल के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ फॉर्मूला रिकलेक्ट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. So this is equal to Kp cos theta r². यहाँ पे P बोले तो डाइपोल मोमेंट, थीटा एंगल बिटवीन P बार एंड R बार. सो एक डाइपोल यहाँ पे बना लेंगे हम. ये वो P बार, P1 बार, इसका एक डाइपोल और अलग सा डायग्राम बना लेंगे. एक डाइपोल हुआ यहाँ पे P बार और दूसरा डाइपोल ये दोनों, ये -2q चार्ज और 2q चार्ज, इसका डाइपोल होगा कितना? डाइपोल मोमेंट लेंथ कितना है यहाँ पे 4l है और चार्जेस कितना हुआ 2q -2q. इसका अलग सा डाइपोल. दोनों एक ही जगह पे रहते हैं. ए हुआ P1, ए हुआ P2. P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू हुआ 2lq. डिस्टेंस बिटवीन चार्ज L एंड AL है. और P2 का वैल्यू हुआ, P2 का वैल्यू है 4l. इसका हाई कैप लिख देंगे 4l 2q हाई कैप. टोटल
इसका 8 LQ है। बाद में इसका फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट पी, और कुछ भी बोल दो। तो व्हाट इज एंगल, एंगल थीटा, और इसका हुआ एंगल से 5 रख दो। थीटा कितना है, 60 डिग्री। बाकी बचे बचे एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60, इसका होगा 120 डिग्री। तो रख देंगे वहां पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल 1 ड्यू टू डाइपोल 2। पोटेंशियल, पोटेंशियल तो स्केलर है, तो उसका स्केलर एडिशन ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हुआ के पी वन कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हुआ पी कॉस फाइव आर स्क्वायर। पी वन का वैल्यू 2LQ कॉस 60 डिग्री आर स्क्वायर के, P2 का वैल्यू 8LQ कॉस 120। अगर आपको डाइपोल, अगर ये फॉर्मूला आपके याद रहे तो ये काफी इस प्रॉब्लम वाला है। अगर आपको ये सिंपल चाहिए, हर हर चैप्टर का थ्योरी, बैकग्राउंड थ्योरी, डाइपोल, और इज अ डाइपोल, यहाँ पे दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसका डिस्टेंस बिटवीन देम। So charge Q into 2L. Sir, minus Q, Q नहीं. No, the dipole moment will be directed from negative to positive point charge. Will be directed from negative to positive point charge. And उसका dipole moment कितना है formula? What is the formula? Charge into separation between charges. पहले वाला का dipole moment right side में रहता है, high cap. दूसरा वाला का dipole moment it will be towards left side. Okay, fine. 8LQI. Yeah, this is very important. बाकी सब formulas, और दिस इज अ बेसिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला, ये तुमको याद रखना पड़ता है। अगर ये याद रहे तो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। प्लीज डेली रिवाइज फॉर्मूलाज। तो व्हाट इज थीटा सर, देन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, अगर यहाँ पे देख लो, ये डाइपोल मोमेंट P1 है और दिस इज R है, ये जो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर, इसको यहाँ पे हम थीटा बोलते हैं। और इसके यहाँ पे क्यों ले रहे हैं आप, इसको डाइपोल मोमेंट, सेकंड डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन डाइपोल एंड पोजीशन वेक्टर, इसलिए cos फाइव। सोल्व करेंगे इसको, K2L cos 60 1/2 cos 120 minus 1/2, or next step, so let me solve it, minus 1/2। so ये हुआ हमें 2, यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, 4 minus 3KQ L by R square। K का वैल्यू कितना है, 3 इंटू, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9 Q L by R square। तो कुल मिला के पोटेंशियल कितना हो यहाँ पे, 27 Q R square इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे हम अल्फा अल्फा का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 27। दिस विल बी योर आंसर। बिना इस फॉर्मूले के हम कुछ नहीं कर सकते। और सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑन द एक्सिस फॉर्मूला K2KB बाई स्क्वायर, और इसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कितना कितना होगा, KP बाई वाई स्क्वायर। ओके,
फाइन। और सर लगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पॉइंट पी पे इसके लिए फॉर्मूला होगा के पी बाय आर क्यूब 3 cos square theta plus 1 आर थीटा थीटा दिस वन फिनिश होगी। दिस आर द बेसिक आइडियाज ऑफ डाइपोल। और टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रहे तो उसका टॉर्क कितना है, उसका इंट्रैक्शन पोटेंशियल जी कितना है। ऑल दीज आर बेसिक आइडियाज ऑफ डाइपोल। प्लीज रिवाइज once again and just remember the basic formulas and practice some previous year questions based on dipole. We'll take the next question. This is the between two pointers the Q1 Q2 placed in vacuum at R center practice what is the हमें दो पॉइंट चार्जेस हैं इसको स्पेस में रख देंगे Q1 Q2। इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे द फोर्स अगर अनलाइक चार्जेस रहे तो द फोर्स विल बी रिपल्सिव, लाइक चार्जेस रहे तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, अनलाइक बोले तो अट्रैक्टिव। देन फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डायइलेक्ट्रिक एट R/5। तो यहाँ पे हम एक मीडियम लेके आएंगे। पहले ये वैक्यूम में थे R/5, इसका डिस्टेंस भी कम कर देंगे। और ये जो सेपरेशन है Q1 Q2, इसका सेपरेशन हुआ R/5। अब इसका वैल्यू पूछ रहे हैं एफ डैश, इसका हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो मीडियम हुआ K इक्वल टू 5 डायलेक्ट्रिक मीडियम। एग्जाम में सब डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, हाँ, यू हैव टू इमेजिन। ये सब आपको इमेजिन करके ये इक्वेशंस लिखना पड़ता है, यू कांट ड्रॉ डायग्राम। और ये पहले सेक्शन में ये दो चार्जेस दैविंग वैक्यूम, इसका जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस है they will find what is the Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 के बदले हम ये लिख देंगे 4 pi epsilon naught r square F dash when in vacuum। जब ये चार्जेस मीडियम में है Q1 Q2 4 pi epsilon naught, इसका सेपरेशन कितना है R/5। जब ये वैक्यूम में थे द सेपरेशन वाज R, जब ये मीडियम में सेपरेशन कितना है R/5, तो इसका R/5 वैल्यू रख देंगे। बाद में इसका मीडियम मीडियम का वैल्यू कितना है डायलेक्ट्रिक मीडियम की Q1 Q2 4 pi epsilon naught r square। के का वैल्यू है 5 और ए है 25। F by 25/5 कम आंसर हुआ हमारा 5। जस्ट बेसिक कुलम्स लॉ। सर व्हाट डू मीन बाय डायलेक्ट्रिक? मेरे भाई डायलेक्ट्रिक is also called as relative permittivity। इसका अलग अलग नाम होते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी। usually represent by something very simple, Coulomb's law, basic Coulomb's law. Means the Coulomb's force depends also on the medium. This is a basic idea.
Coulomb's force also depends on, this is the idea of the problem. So we'll take the next question. So I have the, यहाँ पे two charges है, two charges Q and 3Q are separated by distance r in air. At a distance x from charge Q, the resultant electric field is zero, the value of x. यहाँ पे हम दो चार्ज ले लेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, Q सेपरेशन कितना है यहाँ पे r, resultant electric field is zero, the value of x is distance x, यहाँ पे ले लेंगे point P, distance is x, और टोटल डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितने r, इसका हम 1 या 2 इंडिकेट कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से इट विल बी E1, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इट विल बी E2. इस पॉइंट चार्ज की वजह से विल बी E2. यहाँ पे जीरो बोल रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द नेट फील्ड, नेट फील्ड शुड बी जीरो. नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार, इट हैज बिकम जीरो. कितना हुआ, के क्यू एक्स स्क्वायर. E2 का वैल्यू कितना है, के 3Q r माइनस एक्स होल स्क्वायर. ने इसका वेक्टर साइन दे देंगे, माइनस आई कैप, सो Q बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे, r माइनस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3rx, तो ये वो r स्क्वायर 3rx इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस r स्क्वायर, x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3r प्लस और माइनस 9r स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 8r स्क्वायर. r माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसका तो 2rx हुआ ना, इसका वैल्यू 2r, ये हुआ 4r. x value minus 2r plus r will be root 12. Root 12 we can write it as 2 root 3 और इसका 4. x equal to r, एक 2 कैंसिल हो जाता है, r प्लस और माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2. नेगेटिव तो नहीं होगा, ये रूट 3 माइनस 1 ले लेंगे आंसर. माइनस 1 बाई 2. of x okay, then इसका multiply बाकी सब मैथमेटिक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 1. तो ये वो
r बाय √3 + 1। यहाँ तक तो आंसर है, बट he has taken the conjugator, so we'll divide and multiply। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर √3 + 1 से डिवाइड कर लेंगे। तो √3 - 1, √3² - 1² will be 3² - 1² will be 3 - 1 2। A2 न्यूमरेटर में जो 2 और डिनोमिनेटर 2 कैंसिल होके हमें आंसर यहाँ तक सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है हमें। ओके, दिस विल पिक अप दिस ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इट्स लाइक ए सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ओनली। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वहां पे आपको क्या है कि एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रहता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वी आर एक्सप्रेसिंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। Identical charge spheres are suspended by string of equal length. The strings makes an angle with each other. When suspended in liquid of density, the angle remains same if the density of material of the sphere। तो आप यहाँ पे हमें दो चार्जेस स्पीयर्स ले लेंगे। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर्स। वी आर सस्पेंडेड, इसको हम यहाँ पे सस्पेंड करेंगे। दे आर इन एयर, टेंशन T1, T भी लिख सकते हैं द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। पहले आर सस्पेंडेड, पहले एयर में है, दे आर इन एयर। यहाँ पे मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, दिस एवरीथिंग इज इन एयर, दिस द कंडीशन। उसका एंगल स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर। ये जो एंगल है 37, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। और कौन सा फोर्स वेट है, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू, और इसका वैल्यू हुआ थीटा, इसका वैल्यू हुआ थीटा। सो T sin थीटा इक्वल टू F। इसको जो टेंशन है इसका रिजोल्व कर देंगे। टेंशन शुड एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। इसका ऑर्जेंटल कंपोनेंट कितना हुआ टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा नाउ विल बैलेंस एफ। इसका ऑर्जेंटल कंपोनेंट कितना हुआ टी साइन थीटा, दिस विल बैलेंस एफ। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ टी कॉस थीटा, ये जो टी कॉस थीटा है इट विल बैलेंस एम जी, या टी कॉस थीटा हियर विल बैलेंस एम जी, लिख देंगे। नो, यहाँ पे टी कॉस थीटा विल बैलेंस एम जी, बल्कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, डिवाइड दिस टू, हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा। नाउ ये जो दोनों पेंडुलम्स है ना, ये दोनों पेंडुलम्स और दोनों स्पीयर्स को लिक्विड में डुबा देंगे और लिक्विड में इमर्स कर देंगे। व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मींस लिक्विड में है, सॉरी दोनों पेंडुलम्स को लिक्विड में इमर्स कर देंगे। सस्पेंडेड, इसका मीनिंग थोड़ा बहुत, वही चार्ज पेयर्स को विल सस्पेंड इन द लिक्विड। एनी कंडीशंस में, एनी कंडीशंस के बाद कंडीशंस कहते हैं कि जो एंगल है बिटवीन द स्ट्रिंग्स वो कांस्टेंट रहता है। जो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। दिस ए एंगल चेंज नहीं होता है। देन कौन से फोर्सेस यहाँ पे ऐड करते हैं हम, एम जी,
एम एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाउ चेंज होता है। क्यों क्यों ये चेंज होता है कि इसका जो मीडियम है ना, दिस इज द लिक्विड। यहाँ पे हम येलो कलर, दिस एवरीथिंग इज लिक्विड। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं, एप्सिलॉन आर, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही है। देन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे अब? टेंशन टी डैश, टेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है, और इसके अलावा बाइंड फोर्स। हाँ, बाइंड फोर्स सर किस लिए बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स जो now the spheres are there, now they are immersed in liquid. So definitely upward thrust of bind force will be acting with the bind force. Potential flow different because it is immersed in liquid. So definitely, and then the electrostatic force also will change. Theta remains same, so the tension has to change. Now it's the equation, the effective weight. So we'll write like this. This angle will be theta. Here, angle over theta. So T dash sine theta minus Fe dash equal to 0. T dash cos theta mg minus Fb, इस तरह हम लिखेंगे, और Fb माइनस एम जी इक्वल 0। इस इक्वेशन को दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये हुआ mg minus Fb. This equation T dash sin theta equal to Fb. इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। देन अगेन tan theta इक्वल टू mg minus Fb by Fe dash. Now ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पर हमें यहाँ पे Fb by tan theta value Fb dash by mg. Fe का वैल्यू कितना है? Q1 Q2 आइडेंटिकल, Q स्क्वायर चार्जेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो डिस्टेंस है दिस विल रिमेन सेम। ये तो चेंज नहीं होता है। एक्स स्क्वायर एम जी क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो मीडियम है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो द इफेक्ट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, देन दिस एक्स स्क्वायर एम जी माइनस एफ बी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन आर वैल्यू हुआ mg by mg minus band force, m was density of the sphere, volume of sphere, g, density of sphere, volume of sphere. Band force was density of liquid, volume of the sphere into g. Okay, this will be like this. Next, the value subtract करेंगे। Density of liquid, density of liquid 0.7 है, density of sphere 1.4 है। Okay, इसका 1.4 the value of this is our answer. Okay, बच्चों, like
तुमको थोड़ा बहुत बायोन्सी का व्हाट इज द बायोन्सी फॉर्मूला? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी। दिस द मिनिमम बेसिक कॉन्सेप्ट बायोन्सी के बारे में। थोड़ा बहुत तो आपको फॉर्मूला फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, बाकी सब भी आई थिंक पता है। जैसे थोड़ा बायोन्सी का यहाँ पे थोड़ा आइडिया अगर है तो इट बी वेरी इजी फॉर यू। और इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपवर्ड थ्रस्ट। तो इसका सर व्हाट इज दिस एक्चुअली? इसको बायोन्स बायोन particle of charge minus 2 in mass moves in a circle of radius are around infinitely long line charge. The time period will be given by, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। So we'll consider one long line charge। यहाँ पे लॉन्ग लाइन चार्ज, चार्जेस कितना है? पॉजिटिवली चार्ज, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एक घूम रहा है हा? किसके ऊपर से नहीं, वी हैव टू से बिसाइड। ये जो पॉइंट चार्ज है, नो नो, रॉड के तरफ से घूम रहा है सर्कुलर पाथ। तो इसका रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज। अगर एक जो लाइन चार्ज, इसका lines of force will be radially outward। there's a minimum idea, अगर आपको रहे तो it will be easier then। बाद में सर व्हाट इज दिस? ये तो लाइन चार्ज हुआ, इसका टॉप व्यू मैं दिखा रहा हूँ। तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है लाइन चार्ज, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस ए प्लेन डायग्राम, दिस ए टॉप व्यू डायग्राम। ये जो है ना, दिस विल बी ए टॉप व्यू डायग्राम। देन इसका वैल्यू कितना है? ई लैम्डा बाय 2 पाई एफ नॉट आर। सो व्हाट इज आर? आर इज दिस वन। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हो गया रेडियली आउटवर्ड, एंड यहाँ पे जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। So this will be Fe equal to Q into E। And जो force I know, this is surrounding line charges के घूम रहा है। That is possible for circular motion। तो यहाँ पे centripetal कौन वो is providing, कौन centripetal force provide कर रहा है? जो ये electrostatic attractive force यहाँ पे जो है, इसकी वजह से और ये tangential velocity की वजह से it will move in a curved path। This is one basic idea। अगर आपको फिर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बोले तो देन यू गो फॉर प्लेन डायग्राम। यहाँ पे ये जो लाइन चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इस तरफ एक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेलोसिटी। सो हाउ इट इज इन सर्कुलर पाथ? ये दोनों की वजह से, बिकॉज ऑफ ए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर ये जो वेलोसिटी नहीं रहे तो ये पॉइंट चार्ज है ना, ये लाइन चार्ज के तरफ दौड़ के चला जाता है। अगर ये लाइन चार्ज नहीं रहे तो
ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वजह से ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, सीधा सीधा ये इस तरफ चले जाता है। तो सर्कुलर पाथ के लिए क्या क्या नेसेसरी, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर ये दोनों है तो देन नो दे कैन मूव इन सर्कुलर पाथ। सो हाउ कम्स लाइक फोर्स एंड वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल का बेसिक लेवल, अगर प्रोजेक्टाइल, अगर आप वेलोसिटी दे रहे हो और वेट है, तो कैसे प्रोजेक्टाइल मूव होता है, इट कैन मूव लाइक दिस। ये तो सभी प्रैक्टिकल सभी को पता है। अगर ये पत्थर पे एक दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो पत्थर है, ये क्यों सीधा वर्टिकली क्यों नहीं मूव हो रहा, मूव नहीं हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली क्यों मूव नहीं हो रहा है, ये ऐसे लेके कर्व्ड पाथ में क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेट एंड वेलोसिटी। यहाँ जो वेट एंड वेलोसिटी दोनों की वजह से इट इज मूविंग इन कर्व्ड पाथ। द सेम आइडिया व्हाई ए सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, एनी फोर्स, कौन सा तो फोर्स ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, वेट, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, एनी फोर्स कैन प्रोवाइड दिस, फाइन। नो, दिस पर्टिकुलर फोर्स will provide required centripetal force। और सेंटीमीटर का फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर है। एफ ई का वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे लगा देंगे क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पीरियड। सो इंस्टेड ऑफ वी वी यूज ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज वी इक्वल टू अगेन आर ओमेगा। सर हम ओमेगा का डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं आपको, ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन, एक्चुअली वो इस तरफ रहता है ओमेगा, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन। नो, इसका क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बिकम 2 पाई बाई टी। यहाँ पे टाइम पे विल बिकम 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम बाई क्यू लैम्डा। 2 पाई आर विल टेक आउटसाइड, 2 पाई आर अगर बाहर निकले तो एम एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू लैम्डा। इसका एप्सिलॉन नॉट एडजस्ट कर सकते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका 4 पाई आर एम एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा, एप्सिलॉन का वैल्यू वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ के। ओके बच्चों, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर ये डायग्राम, ये फॉर्मूला आपको पता है तो देन यू कैन मैनेज दिस। एंड थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाई आर। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ये सिंपल डाइपोल के बारे में पूछ रहे हैं। डाइपोल, डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज रहते हैं, एक नेगेटिव देन दूसरा वाला पॉजिटिव, एट ए डिस्टेंस आर। इसका यहाँ पे आपको पोटेंशियल पूछ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट 2L क्यू। So what is the dipole moment? अगर what is the actually sir a negative positive charge? This particular dipole moment is used more in the electrochemistry. When the material gets polarized, the atom only will behave like a electron. Atom only
दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मटेरियल पोलराइज हो सकता है, अगर कोई मटेरियल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से द चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके वजह से क्या है कि लगे दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक डायपोल। फिनिश श्योर। सो एटम सी इलेक्ट्रिक डायपोल है, हर एक एटम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं। तो जिसका सब्सटेंस पोलराइज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तुम, देन दैट पर्टिकुलर एटम विल बिकम डायपोल। सो इसलिए डिस्टेंस जो है नो, सो दिस विल बी एल विल बी वेरी मच लेस देन आर, बिकॉज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बहुत कम होगा। So that's why L will be always less than capital R. R बोले तो it a distance R outside the atom. यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो what is the potential formula? K P cos theta, आपको याद रखना पड़ता है इसको। We can derive, but directly formula is available. Sir, what is the K? 1 by 4 pi epsilon naught. What is theta? So theta क्या है यहाँ पे? Angle between R bar and P bar. P bar direction will be from negative to positive charge. तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। सो व्हाट इज द पैरेलल कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट इज गिवन बाय 2kp sin theta by r cube. E perpendicular will be kp cos theta by r cube. अगर यहाँ पे नेट फील्ड पूछे तो इसका वेक्टर सम ले लो। ये सब थ्योरी है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जाके पढ़ो, एक 10 मिनट में आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। नॉट वेरी बिग, जस्ट ओनली 10 मिनट्स। ये फॉर्मूला याद रख लो। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम kp r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। cos थीटा cos थीटा ये हुआ sin थीटा पैरेलल कंपोनेंट। सो ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ, दिस इज द नेट फील्ड। नेट फील्ड एट a point A at a distance r from the dipole, where the dipole will make an angle theta with a position vector with a basic formula. इसको याद रख लो बस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट गॉस लॉ। Electric field is given by electric field through a surface lying in yz plane. Definition flux equal to E bar dot S bar. E bar vector 6 I cap 5 j cap 3 k cap dot area vector हुआ 30 I cap। I dot I1, I dot G dot I0, I dot I value कितना, I dot I1, J dot I value 0, K dot I0। So total value 6 into 30। ऐसा यूनिट, इसका यूनिट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर कूलम पर मीटर। 180 इसका फ्लक्स।
सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये थोड़ा लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में इंफॉर्म देता है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव रहे तो द फील्ड इज कमिंग अवे फ्रॉम द सरफेस। अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव रहे तो द फील्ड इज एंटरिंग द सरफेस। दिस इज वन थिंग, सो इट विल गिव द डायरेक्शन। फ्लक्स पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एमर्जिंग थ्रू ए सरफेस। अगर इसका फ्लक्स नेगेटिव रहे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटरिंग ए सरफेस। सो जो फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, इट विल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको देता है। देन उसके बाद इट विल गिव अस द लाइंस ऑफ फोर्स। बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स तो वो इमेजिनरी हम ड्रॉ कर रहे हैं। So, कितना है लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेन वोल्ट के लिए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 वोल्ट पर मीटर। और एक वही रीजन में दूसरा फील्ड लेके आता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है? 30 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट के लिए कितना लाइंस ऑफ फोर्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? 30 वोल्ट के लिए कितना लाइंस ऑफ फोर्स हमें ड्रॉ करना पड़ता है? अगर आप 10 वोल्ट के लिए अगर आप 10 से लेकर 100 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, 30 वोल्ट पर मीटर के लिए आपको 300 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए 10 के लिए अगर आप से लेके विल विल डू वन थिंग। 10 के लिए सर मैं 20 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। 30 के लिए कितना तुम 60 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है आपको। फाइन। तो दिस आर द लाइक सर, लाइक दूसरा स्टूडेंट सर लाइक वो 200 कर रहा है और 30 के लिए 600, वो भी सही है। यस। सो टू मेक इट यूनिफॉर्म थिंकिंग, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट द आइडिया ऑफ फ्लक्स। बट इट शुड बी रेशियो। अगर 10 के लिए आप 20 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करे बोले तो 30 वोल्ट पर मीटर के लिए आपको 60 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है। तो टू हैव द यूनिफॉर्म थिंकिंग, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट द आइडिया ऑफ ए फ्लक्स। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो गिवन सरफेस द ई इज मोर, अगर फ्लक्स कम है तो ई इज लेस। So like this now, a better way of studying the electric field through the flux than through lines of force. That is the basic idea of which one. इससे आप ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। Electron is moving under the influence of the electric field of a uniformly charged infinite plane sheet having surface. The electron at t equals 0 at distance 1 meter from s and at a speed of 1 meter. The maximum value of sigma if the electron strikes s at t equal to। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। यहाँ पे हम चार्ज शीट ले लेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? द चार्ज शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये जो इनफाइनाइट है, मैं फाइनाइट दिखा रहा हूँ। चार्ज शीट having surface charge density plus sigma। तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग? अगर कंडक्टिंग है तो यू हैव मेंशन charge conducting plate sheet, infinite plate sheet. So this will be non-conducting sheet. So इसका वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेंगे। कितना डिस्टेंस में, कितना दूरी में है? 1 मीटर फ्रॉम शीट। एंड इसका स्पीड कितना है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड इनिशियली वी नॉट बोलेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एस एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। t इक्वल टू 0 द इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है।
देन 1 सेकेंड के बाद यही इलेक्ट्रॉन है ना, सो इट विल कम एंड स्ट्राइक दिस, आके इस शीट को टच करता है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एस एट इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके शीट को टक्कर मारता है, बिल्कुल है. इसको कोलिजन बोलते हैं. एक्सप्लोजन करता है. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो ये तो रिटार्डेशन होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई टुवर्ड्स राइट. सो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है बी टुवर्ड्स राइट, सो ये रिटार्डेशन हो जाता है. तो कितना टाइम लेता है? सो इट विल टेक द 1 सेकेंड. एंड एक डिस्टेंस भी दे चुके हैं, सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी va माइनस a इंटू टी. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर. यहाँ पे लगा दो. एक्सल रिटार्डेशन क्यू ई बाई एम. टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड. और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई सो भी पूछ रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, देन क्यू ई बाई एम शुड बी इक्वल टू 1. ई का वैल्यू कितना हुआ? एम बाई क्यू. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा का वैल्यू कितना हुआ? 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके फाइन. सो इसका हुआ 2 कूलम पर मीटर. दिस विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर. हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी कौन सा भी नहीं. द फॉर्मूला विल बी सेम. अगर अगर आप x इक्वल टू द वैल्यू विल बी सेम 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज अल्फा. mf not 2, so alpha will be 2. So the misprint answer will be 2. The value of alpha पूछ रहे हैं. सर व्हाट इज यहाँ पे सिग्मा? सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी. आप ई को यहाँ पे सिग्मा 2s क्यों बोलते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. इसका बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. और आपको टू गॉस यू हैव टू डिराइव इट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Into conducting sheet sigma by epsilon naught. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे. Like we have to match the list. There's a basic, ये तो आपको पता है. This is the Faraday's law. Sorry, Gauss law. Gauss law for electricity. So C का ऑप्शन है 1. Then ये तो मैक्सवेल्स एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ. मैक्सवेल्स इक्वेशन में इसको हम कंडक्शन बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डीएल. सो ए का वैल्यू हुआ 4. डीएल है, नॉट डी आई, डीएल. सो दिस इज द फैराडेस लॉ. EMI chapter, electromagnetic induction. This is EM waves. Chapter, this is electromagnetic induction. And this is Gauss law. A Gauss law for magnetism.
ये electromagnetic induction chapter है, this is EM waves chapter है, and this is the magnetism chapter. So then we'll match it. So B over Faraday's law, D over Gauss law for magnetism. Just definition. In detail in that particular chapter I'll be explaining. हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. Two charges 5q minus 2q are situated the electric flux through a sphere of radius 4a having center at origin. तो पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे. पॉइंट 3 इसका स्फीयर का रेडियस कितना है इंडिकेट कर लेंगे हम. इसका स्फीयर का रेडियस हुआ इसका 4 है और 3a,0 यहाँ पे आपको एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा चार्ज कहाँ पे है -5a,0 -5a,0 बोले तो ए नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट पे ये जो चार्जेस हुआ PYQ -2q का चार्ज कितना है -2q. इसका डिस्टेंस ए जो 4a है दिस डिस्टेंस इज कितना हुआ ए वाला तो स्फीयर है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं. व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू a sphere so the net flux should be equal to q in by epsilon naught. तो स्फीयर जो चार्ज एनक्लोज है उसी की वजह से फ्लक्स रहेगा. So this will be 5q by epsilon naught. Sir, what is the meaning? Like हम बहुत पढ़े हैं सर. लाइक सभी लेक्चर्स बोलते q in by epsilon naught. जो चार्ज अंदर है उसी की वजह से नेट फ्लक्स है. So उसका मीनिंग क्या है सर? लगे what is the meaning of that? हम यहाँ पे ले लेंगे. हम दूसरा कलर्स ले लेंगे. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज PYQ. ओके फाइन. और इसका जो लाइन्स ऑफ फोर्स माइनस इसका और इसका कितना 1 2 3 लाइन्स. रफ डायग्राम यहाँ पे काउंट करेंगे कितना लाइन्स हम 5 के लिए कितना ड्रॉ करें. 5
कितना काउंट करेंगे, 5 5 8 9 10 11 12 15 लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। कितना होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे, 15 लाइन्स ऑफ, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और एक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे लगा देंगे। तो फॉर 5Q चार्ज 15 लाइन्स, तो -2Q के लिए रेशियो, द रेशियो शुड बी सेम। फॉर 5Q के लिए हम 15 ड्रॉ कर रहे हैं। 2Q के लिए कितना लाइन्स, तो दिस विल बी 15 इंटू 2Q बाय 5Q। 6 लाइन्स ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो मैं हटा देता हूँ थोड़ा, लेट मी री ड्रॉ इट। सो कितने हुआ, 6 लाइन्स ऑफ फोर्स, उसमें से एक लाइन्स ऑफ फोर्स एक यहाँ पे दो, अभी दो, अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, these are coming out, net flux will be generated। इसका जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, these are what will come like this। इसे ड्रॉ करता हूँ तो 1 2 3 4 5। नेट लाइन्स ऑफ फोर्स देख लो, these are all, these lines of force यहाँ पे ले लो, they are coming out of the sphere। इसका जो lines of force है, this will enter and will leave। इसका जो lines of force है, this will enter and it will leave, terminate, this will enter and leave, this is not at all entering, that's why the net flux will be zero। ये जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स -2Q चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर होके फिर बाहर निकलता है। और 5Q का चार्ज वैसा नहीं है, जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, दे ऑल विल कम आउट ऑफ द स्फीयर। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि नेट फ्लक्स इज ड्यू टू ओनली 5Q चार्ज। मीनिंग ऑफ दिस, अगर तुम लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें तो तभी आपको इसका मतलब पता होता है कि व्हाट मीन बाय नेट चार्ज एक्रोस। तो जो चार्ज अंदर है वही नेट फील्ड कंट्रीब्यूट, वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है। नेट फ्लक्स वन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स। I think in atomic physics के बारे में, so this is the atom। आपको यहाँ पे this atom, the electric potential at surface of an atomic nucleus that is equal to of radius r। So what is the electric potential equal to k q by r square। q का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 9 into 10 to the power of 9, q का वैल्यू z into e by r square। We'll substitute all the values, 9 into 10 to the power of 9, z का वैल्यू 50, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power of -19, r का वैल्यू 9 into 10 to the power of -13 होल स्क्वायर। तो भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। आपको डरने की जरूरत नहीं सर, एटम 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 न्यूक्लियस का उसका चार्ज पॉजिटिव है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस पूछ रहे हैं, नॉट आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर। अगर फॉर्मूला जाए तो वेरी इजी। सो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज z into e। थोड़ा
idea of the atomic is rest of the electrostatics, but charges can hold form of PQ. Simple idea based. दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. यहाँ पे दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है. इस पॉइंट के यहाँ पे रख चुके हैं. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल. पहले हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. इसका डाइपोल मोमेंट, सो वी नीड टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. अगर वो जो सेपरेशन वैल्यू होता है, तो देन विद दैट वी कैन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. पी बार वेक्टर चाहिए हमें. So P bar will be directed from negative to point charge. So therefore the value, the P bar vector will be AB bar into Q. Q is अगर आप minus Q ले सकते हैं या plus Q. AB bar vector 2 minus 1 like that. Position vector plus minus 1 minus 0 J cap. 5 minus 4 K cap. इनका चार्ज का वैल्यू कितना 4 into 10 power of minus 6. This will be I cap minus J cap plus K cap. ये हुआ इसका डाइपोल मोमेंट. इसको हम दिस विल बी कूलम मीटर. इसको हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल? टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार. पी बार का वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ई बार का वैल्यू 0.2 आई कैप. I cross I 0, J cross I cross J cross I minus K. So this will become plus 0.2 K. K cross I will be J. 0.2 J cap. Into 4444 calculation. तो इसका total 4 into 10 to power of minus 6. So this will become 0.8 J cap, 0.8 K cap into 10 to power of minus 6. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहे हैं. इसका मैग्नीट्यूड हुआ 0.8 होल स्क्वायर तो 0.8 रूट 2. सो इसका टोटल मैग्नीट्यूड 8 into 10 to power of minus 5 रूट 2 और 8 रूट 2 into 10 to power of minus 5 न्यूटन मीटर. इसका वैल्यू 2. ओके सर फाइन. आप ये जो फॉर्मूला है आप कैसे लिख रहे हैं? डिस्टेंस से भी अगर आपको ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस से भी कितना. ओके सर लाइक हाउ टू इमेजिन दिस. तो आप एक काम कर सकते हैं लाइक स्मॉल बेसिक इमेजिनेशन. इन स्पेस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज बी. इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर ए बार बेसिक वेक्टर अलजेब्रा आर बी बार. Then RB bar minus RA bar is what the distance AB bar, no?
ये वेक्टर यहाँ पे लगा देंगे एंड ए तो डाइपोल होता है ना. व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल मोमेंट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए बी इंटू क्यू. What is the relation between the charges? The dipole moment is directed from negative to positive point. Simple definition. आप आपका टीचर नोट्स ले लीजिए, जरूर आपको बेसिक आइडिया वहां पे देता है, एंड दिस फॉर्मूला आपका टीचर डिराइव करके वहां पे नोट्स में रहता है. अगर आप टीचर नोट्स रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली आपको ये सब इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है, एंड आप जब पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, ये सब याद हो जाता है. देन आप जब PYQ कर रहे हो, इमिट डाइपोल, ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो, अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रहे तो, दिस क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप ब्लाइंड फॉर्मूलाज मैनेज नहीं कर सकते. एग्रीड? तो अगला क्वेश्चन दे देंगे. पहला assertion reason, work done by electric field and moving a positive charge on equipment is always zero. Electric line force always perpendicular to equipotential space. I think there's a basic concept. Work done. What is the formula for work done? Work done in moving a charge from A to B by electrostatic force equal to Q into A minus B. Equipotential. बोले तो V equal to VB. अगर V equal to VB बोले तो then the vessel becomes zero. तो work done कितना होगा? Zero. Option A is correct. Assertion is correct. Then electric lines of force are always perpendicular to equipotential surface. Yes, it must be. There's one basic rule. अगर सर perpendicular नहीं रहे तो क्या होगा? It will violate law of conservation of energy principle. If E bar is not perpendicular to equipotential space, it violates law of conservation of energy. If law of conservation of energy gets violated, then it's not physics. These are fundamental. Both are correct. And reason is a correct expression. So how you justify this? What is the equipotential surface? Two points are at same potential. And again, what is the condition? The A1 must be perpendicular. If two points are at same potential, then only E bar will be perpendicular. Agar this is the thing. If E bar like this, A bar, agar E bar to some direction, then definitely open due to E cos theta, VA will become greater than VB. Then not become equipotential. Agree this. If E bar is perpendicular to the equipotential surface, then what happen? VA, VB will be at same potential. If E bar is not perpendicular, what will happen? Then component of E cos theta will come. Due to E cos theta, again VA greater than VB, they'll not be equipotential. Fine. I think explanation ले लेंगे. Not option 1, in fact option 4. Next अगला क्वेश्चन ले लेंगे. यहाँ पे हमें
में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अनदर पॉइंट चार्ज यहाँ पे सेंटर पे हम रख रहे हैं, क्यू चार्ज, टू पाई कूलम। इसका टोटल चार्ज 2 पाई कूलम है। Then this is all. Please, we have to calculate the tension in the ring. यहाँ पे हम एक एलिमेंट चूज करेंगे, फाइन। तो इस एलिमेंट रिंग का ही एक थोड़ा छोटा सा हिस्सा हम पार्ट ले लेंगे। इस छोटे से पार्ट में भी चार्ज रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, एक जो टोटल रिंग है पॉजिटिव चार्ज, सो हाउ द रिपल्सिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स द रिंग स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। दिस इज बेसिक आइडिया। एक जो रिंग है because of repulsive force. So why this repulsive force? अंदर यहाँ पे आपको positive charge है. What is the charge of ring? Charge of ring is also positive. So total repulsive force हर तरफ रिंग को ऐड करता है। So इसके वजह से क्या है कि रिंग will get now a tendency to expand. Then it start expanding. Then ये expansion रुकने के लिए, then as this having elasticity, so therefore it will bring a deforming, restoring force. The restoring forces is nothing but what we'll show, we'll call them as tension. I think this is a basic concept, not something very new. Already at many places you might have come across. Some mathematics will assume this is the theta, phi will assume. Theta again will get confused with the charge. ये जो angle हुआ phi. Everyone maths okay, no problem. ए होगा रेडियस, इसका चार्ज कितना है, d2 चार्ज, और इसका एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज सेकंड एंगल फाई, इसका रेडियस हुआ r, इसका लेंथ हुआ डेल्टा l। And the tension should act tangentially. There's one property of tension. टेंशन जो भी है वो इट विल एक्ट टैंजेंशियली। यहाँ पे हम एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय 2 sin phi। इसका कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस तरफ आता है। I'll explain through diagram। इसका कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करें तो t sin थीटा, और अगला कंपोनेंट होगा t cos phi। सेम थिंग इसका वन कंपोनेंट, अगर ऑरिजेंटल कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो दिस विल बिकम t cos phi, वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम t sin phi। तो t sin phi ये दोनों ऐड हो जाते हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम ले लेंगे t sin थीटा प्लस t sin थीटा, df कितना, यहाँ पे चार्ज कितना है, q है, एंड df है चार्ज, यहाँ पे लगा दो k dq q, या फिर क्यों रख देंगे इसको r स्क्वायर, theta very small, sin theta will become theta। स्मॉल q ही रख देंगे। वेट सिंबल्स। ओके फाइन। तो ये जो एंगल है ना फाई है। ओके नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे इसका, कि वैल्यू हुआ, टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, डी क्यू विल बी लैम्डा इनटू डी एल।
और डेल्टा एल। क्यू आर स्क्वायर 2 पाई थीटा। लैम्डा लैम्डा विल बी टोटल चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू क्यू चार्ज है, इसका टोटल चार्ज हम क्यू नॉट ले लेंगे, क्यू नॉट बाई 2 पाई आर। डेल्टा एल वैल्यू आर 2 पाई आर स्क्वायर, क्यू चार्ज 2 पाई के क्यू नॉट क्यू 2 पाई। यहाँ पे देखो के वैल्यू क्यू नॉट क्यू, ये जो 2 पाई है 2 पाई दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ पे आपको आर आर स्क्वायर आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर विल बी एल रही राइट, आर स्क्वायर हुआ 2 पाई, के का वैल्यू कितना 1/4 पाई। अगर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज सॉल्व करो, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली। लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Electric charge is placed at 0, 0 corner 2 points P and Q are situated. Potential difference पूछ रहे हैं यहाँ पे। We'll draw the rectangular coordinate system. ये जो पॉइंट हुआ 3,3 और दूसरा पॉइंट हुआ 6,3। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3,3 पे 3,3 में that is the 1 point 6,0 √6,0 √6,0 तो दिस इज पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो दिस यू कॉल आर ए, ये तो आर बी हुआ, ये तो एक्स एक्सिस हुआ, तो इसका डिस्टेंस कितना है √6, और ए कितना हुआ √3, ये हुआ √6। पोटेंशियल एट पॉइंट ए के क्यू आर ए, potential at point B, K, Q, RB. Potential difference between P and Q, VA minus VB, KQ 1/RA minus 1/RB. RA का वैल्यू कितना है √3²√3²। RB का वैल्यू होगा √6। Potential difference will be 0. Simple. Just basic definition. Potential is a scalar quantity. दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक
Suppose a uniformly charged will produce uniform electric field normally. It will produce an uniform electric field. A charged particle mass 2 is suspended to a cylinder and remains at a distance 10 centimeter from the wall. यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे. क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल सस्पेंड इसी पोजीशन पे रहेगा. इसका चार्ज पार्टिकल क्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इसका एनर्जी, इसका जो चार्ज है, द चार्ज ऑन द पार्टिकल, इसका चार्ज ये जो है ना चार्जड वॉल है, दिस वन. देन इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर. लेंथ कितना है इसका, सो दिस इज एक्स, विल कॉल दिस इज एल. ये जो लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कितना है 10 सेंटीमीटर. द चार्ज ऑन द पार्टिकल, इसके क्यू के बारे में पूछ रहे हैं. सो विल टेक दिस इज द थीटा. यहाँ पे जो टेंशन, इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. तो विल बैलेंस नो, अगर आप देखें तो कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी, ये जो कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी साइन थीटा ए एम जी को बैलेंस करता है, और दूसरा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, दिस विल बैलेंस एफ ई. विल राइट डाउन द इक्वेशन. P cos theta will balance F E. P sin theta will balance H. So then this will be cos theta, tan theta will balance mg by F E. mg by Q. cos theta का वैल्यू कितना है, x by L, ये हुआ 10/20 1/2. तो थीटा वैल्यू 60 डिग्री. अगर थीटा 60, tan थीटा tan 60 इक्वल टू mg by QE. tan 60 √3, m का वैल्यू 2 ग्राम है. इसका हम kg में कन्वर्ट कर देंगे. g वैल्यू 10, चार्ज, okay, this will be 2 into 10 to the power of 4. Everything will solve for q, we'll get the required answer. 1/√3. 1/√3 into 10 to the power of -6 coulomb. Simple idea. Electric field due to the डायरेक्टली, इसके सर, इसके बारे में हमें पता नहीं सर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नो नीड, डायरेक्टली इसका वैल्यू दे चुके हैं. अगर आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है बोला तो वैल्यू लगाइए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. चार्ज डेंसिटी वॉल के ऊपर कितना है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ये बॉब का जो चार्ज है कितना है, देन अगर कौन सा भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उसका फोर्स कितना होगा, क्यूई. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज which is kept in electric field means जो चार्ज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, Q into E. This is a concept. Rest all everything you know. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे, C1 एंड C2. यहाँ पे हमें दो क्यूब मिलेंगे, एक बड़ा वाला ब्लू कलर, उसको शेड कर रहा हूं मैं, फाइन, और दूसरा वाला ग्रीन कलर का. तो आई थिंक अब डायग्राम वेरी क्लियर. छोटे वाले क्यूब में कितना चार्ज है, 2 क्यूब. बड़े वाले क्यूब में 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब. So this given C1 as including C1 is green
जो ब्लू कलर का क्यूब है, ये जो ग्रीन कलर का क्यूब में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है? 2Q. Only the charge enclosed will produce net flux, no? So we'll call this flux enclosed by the C1 will be 2Q by epsilon naught. Flux enclosed by the blue color cube will enclose 3Q plus 2Q. Total will be 5Q by epsilon naught. So ratio of flux phi1 by phi2. 2Q by epsilon naught 2 by pi. सर अगेन सर लाइक आप इसको 5Q क्यों ले रहे हैं? 3Q एंड 2Q दोनों कौन से बड़े क्यूब में है? 2Q है वो एक छोटा वाला क्यूब में है, जो चार्ज एनक्लोज है वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है। सर अगर आप आउटसाइड एक चार्ज नेट फ्लक्स ग्रीन वाला क्यूब ओनली 2Q एंड ब्लू वाला क्यूब ओनली ड्यू टू 3Q एंड 2Q। सर व्हाट अबाउट प्लस क्यू? जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स ड्यू टू प्लस क्यू है वो यहाँ पे इंटरवल के बाहर निकलता है। नेट फ्लक्स भी ओनली ड्यू टू दिस क्यूब। Fine. These are very important. Gauss law, very, very, very important. Flux equal to Qn by epsilon naught. जो चार्ज गॉसियन सरफेस में उसी के वजह से नेट फ्लक्स होता है. The net flux will be only due to charge enclosed. I think okay. Yeah, okay, this completes your January shift 2024 electrostatics PYQ. तो बहुत सारे जो हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस पॉइंट चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक बेसिक फ्लक्स, देखो तरह लगे ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन सर. जो भी क्वेश्चन पूछे जस्ट पॉइंट चार्ज, कुलम्ब्स लॉ. नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है. वेरी सिंपल है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मत करो यार, सिंपल है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सेपरेशन, थोड़ा सा सेपरेशन उसको डाइपोल. No, reduce to dipole on the field on the bisected distance. The Gauss law, the flux concept. Fine. I think एक घंटे में आप सब रिवाइज कर सकते हैं. theory first. Read theory. Don't do any problems. Read theory. अगर आप theory आपको concept clarity रहे तो then do the problem. बिना बिना concept clarity problem solve करना, उधर इधर वीडियो देखना, कुछ कुछ भी आपको फायदा नहीं होता है. इंस्पिरेशन वीडियोस क्या 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 मिलता है तुम वो इंस्पिरेशन वीडियो देख के? क्लियरली लर्न चैप्टर, 2-3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसके बाद ओके फाइन फॉर्मूला से याद करो, देन सॉल्व द प्रॉब्लम. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वंस अगेन? पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द बेसिक गॉस लॉ. एंड नेक्स्ट कंडक्टर्स. Electric field due to conducting sphere, electric field due to conducting sheet. Okay, fine. So, yes, the next, the April shift in the next week. Thank you, everyone. So, requesting everyone to please share, like, and subscribe our videos. So, without your support, I will not be in a better position. So, I am here because of you people, because of your support only. I'm surviving because of your support. Okay, thank you. Thanks for great support. All the best. Revise all the formulas. Bye. Take care. Good morning, kids. Today's class, we are going to discuss the JEE Mains 2024 PYQ. Chapter name is Electrostatics and Gauss Law. So now we'll discuss the April shift.
Again, once again, the what is the methodology for JEE means, like especially the electrostatics and Gauss law. What are the basic requirements of this chapter? So you must be very good in select the point charges, electric dipole, and Gauss law. Not high level problem, just the basic things. I think this is the region where they're asking plenty of problems. Already in the January shift also, I gave the same instruction, the same thing I'm going to repeat. Then along with this, remember all electric field and potential due to all the charge bodies. Remaining this one, these are the threshold areas. So try to avoid all that lengthy advanced problems. The basic formulas is what you should remember. So read this Alto. It's very lengthy chapter. Read it. So problems will be focused on these areas. Don't go for revising lengthy problems. And this is very important. So you must really remember the electric field and potential due to various charge bodies. Okay, fine. So we'll discuss the problems now. So we have the two identical charge pairs are suspended by strings of equal length. I'll put in Hindi also. यहाँ पे दो चार्ज पेयर्स है, एक दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल लेंथ से या कॉमन पॉइंट से सस्पेंड कर चुके हम, and दोनों strings they'll make angle theta with each other. The angle between the strings is theta. जब वाटर में सस्पेंड करते हैं इसका एंगल सेम होता है, मीन्स पहले एयर में थे, फिर इसको हम वाटर में डुबा देते हैं, will immerse in water, then उसका एंगल जो है वो रिमेन सेम. विद दिस इज आस्किंग फाइंड द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर. यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ मेटल ऑफ स्पीयर्स दिया है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे चुके हैं 1 ग्राम पर सीसी. वी शुड यूज दिस बेसिक इंफॉर्मेशन. ओके, पहले लेट मी टेक हेल्प ऑफ द ये जो स्पीयर है. सो ऑलरेडी आई थिंक इन जनवरी शिफ्ट में सेम प्रॉब्लम हम डिस्कस कर चुके हैं. वही प्रॉब्लम एक डेंसिटी ऑफ मीडियम था वहां पे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर, डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर पूछ रहे हैं. देन व्हाट आर द फोर्सेस, इसका कौन सा फोर्सेस है, लेंथ एल, चार्ज प्लस टेंशन टी, इसका इसका एंगल थीटा बाई 2. यहाँ पे थीटा बाई 2 लगा देंगे. ये पहले चार्जेस और इसका सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज एक्स. पिंक कलर से व्हाट आर द फोर्सेस. यहाँ पे ये जो इसका सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे भी टेंशन टी एंड एम जी. तो इसका क्या हुआ नाउ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. यहाँ पे हम tan थीटा बाई 2, इसका एक काम करेंगे, ये फाइव रख देंगे, ये कुछ काम करने हैं. और थीटा क्या है, थीटा 2 पाई, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स. नो कंपोनेंट ऑफ टेंशन, यहाँ पे t cos फाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin फाई. ये जो t sin फाई इट विल बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, t cos फाई विल बैलेंस mg. At equilibrium we'll write down the equation. T cos तो इसका tan फाई हुआ
बाई एम जी। इसको हम इसी को हम पानी में डुबो देंगे, सो दिल बी इमर्स्ड इन वाटर। जैसे कंडीशन यहाँ पे दे चुके हैं हम, सो लाइक नाउ दे आर इमर्स्ड इन वाटर। ये ब्लू कलर, ये सब पानी है यहाँ। इसको हम सब यहाँ पे पानी में, कंप्लीट सेटअप नाउ पानी में, इसका रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, लेट इट बी रो एल। डेंसिटी ऑफ स्पीयर्स दे चुके हैं, सो उसको हम सिग्मा ले लेंगे। चार्ज भी है और उसका डेंसिटी भी है। दिस इज द सिग्मा। इसका फोर्सेस, बायन फोर्स यहाँ पे भी बायन फोर्स ले लो। टेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है, लेट इट बी टी डैश। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इट विल चेंज। क्यों चेंज हो, बिकॉज द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज चेंजिंग। अर्लियर यहाँ पे तो एयर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। अब मीडियम बिटवीन पॉइंट चार्जेस चेंज हो चुका है, सो इसलिए the electrostatic force also will change, will cause it as Fe dash. Then this will be T dash cos phi zero. So एंगल चेंज नहीं हुआ है। सो ये दो इक्वेशंस हम इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद इसका वैल्यू हो नो एफ ई बाई एम जी, इसका क्यू स्क्वायर चार्ज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एम जी। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू what is m will be sigma vg buoyant force, density of water rho l vg और sigma vg, sigma by rho l minus sigma। इसका सब जो डेंसिटी है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, mg माइनस एफ दिया थोड़ा यहाँ पे, यहाँ पे इक्वेशन में mg माइनस एफ बी होगा। सो थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। तो दिस विल बिकम mg माइनस एफ बी सिग्मा, और ये वो रो एल। नहीं, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में गलत हुआ था। सो दिस विल बिकम सिग्मा माइनस रो एल। तो डेंसिटी ऑफ 1.5, डेंसिटी कितना 1.5 है, यहाँ पे डेंसिटी 1.5 और वाटर का 1 है, तो 1.5 बाय 0.5। सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना है 3। दिस विल बी आवर आंसर। हाँ बेटर बेटर, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म लाइक ए प्रॉब्लम। और इसका फॉर्मूला अगर याद रहे तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके ये आंसर लेके आ सकते हो। हाँ, इतना सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है।
अब जाके चेक कर लो आपके टीचर के नोट्स में, दिस प्रॉब्लम विल बी देयर। आपके टीचर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके रहते हैं। सो रिवाइज करके तुम जब एग्जाम जा रहे हो, these things you have to remember. Age of formula. Okay, relative permittivity depends on density of the sphere by density of the surrounding medium. Directly एग्जाम में फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट फिनिश हो। ऐसे आप थोड़ा जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। An electric field E equal to x I cap exists in a space. A cube of side meter 2 meters squared in space as per given figure. The electric flux through the cube. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेरिएबल, नेट फील्ड थ्रू द क्यूब पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम ये दोनों फ्लक्स है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नंबर दे देंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 2 x I कैप है। सो फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू द सरफेस 1 2 6 5। Flux due to the surface 1265. Next, due to the surface 1485, 2376 will be zero. Why it is zero? Because the E bar will be tangential to the surface for all this one. यहाँ पे आपको E bar का डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे ई बार का डायरेक्शन इस तरफ है और एन कैप का डायरेक्शन इस तरफ है, ये दोनों सरफेस को। बाकी बचे तो सभी सरफेस को ई बार इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, सो इसलिए फ्लक्स विल बी जीरो फॉर दिस सरफेसेस। द रीजन इसका आप यहाँ एग्जांपल ले लेंगे। ये जो सरफेस है ना, लाइक एन कैप, यहाँ पे ई बार इज पैरेलल टू एन कैप, सो देयरफॉर फ्लक्स इस सरफेस में जीरो होगा। ओके फाइन। फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा, फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा, फ्लक्स इस सरफेस में भी जीरो होगा। फाइन। ओके, नाउ द फ्लक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 इक्वल टू ई इंटू इसका 2 मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर है। एंगल कितना हुआ? 0 डिग्रीज। ई का वैल्यू कितना है? 2 इंटू एक्स। एल स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2 स्क्वायर cos 0 1। एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 4 मीटर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 स्क्वायर 16, 32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का वैल्यू एन कैप इस तरफ है। 5 6 7 8 cos 180। ई का वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर है और 2 स्क्वायर -1। तो कितना हुआ?
-16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेट फ्लक्स तो ए चारों का तो जीरो है, तो बाकी बचे सो ये दोनों हैं, 1 2 3 4 -5 6 7 8, इसका ऐड कर लेंगे। नेट फ्लक्स मीन्स एसओबी है। सो इसका तो कितना, 32, ये हुआ -16 और 0 0 0 0, सो टोटल विल बी 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये जो आंसर है, फाइन। दिस इज वन वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, प्लीज डू रिमेम्बर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इक्वल टू ई बार डॉट एस बार। अगर ई हर जगह कांस्टेंट है सरफेस के ऊपर, देन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। अगर ई वेरिएबल रहे तो देन द फॉर्मूला शुड बी, फ्लक्स शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। अगर ई वेरिएबल रहे तो, अगर ई कांस्टेंट रहे तो ई डॉट एस। देन टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे गॉसियन सरफेस है। देन इसमें थोड़ा तीन चार्जेस यहाँ पे एक +5Q चार्ज, और ये जो Q चार्ज है, दिस वन विल बी -2Q चार्ज, दिस विल बी +3Q चार्ज, ये वाला हुआ -4Q चार्ज। एग्री दिस? देन what is the net flux, the electric flux due to configuration through the surface? सर यहाँ पे क्या पूछ रही है, लेके इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पहले एक काम करेंगे, नेट चार्ज कितना है? 5Q, 6Q, 4Q, 4Q हो। देन नेट चार्ज एनक्लोज्ड, यहाँ पे करेंगे नेट चार्ज एनक्लोज्ड। नेट चार्ज एनक्लोज विल बी 5Q + 2Q। नेट फ्लक्स जो है वो ड्यू टू एनक्लोज चार्ज ओनली। एनक्लोज चार्ज कितना हुआ? 4Q, सो दिस विल बिकम 4Q by epsilon naught. This is a net flux. This one, सर वो ये 3Q एंड 4Q क्यों नहीं दे रहे? तो 3Q का जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, इट विल पास लाइक दिस। देन -4Q का, -4Q का इस तरह ले सकते हैं। सो जितना भी लाइंस 3Q का एंटर हो रहा है, उतना बाहर जा रहा है। सेम थिंग, 3Q द लाइन्स ऑफ फोर्स दे आर एंटरिंग एंड लिविंग। -4Q का जितना भी जो एंटर हो रहा है, उतना उतना बाहर जा रहा है। और so like द फ्लक्स लिविंग एंड एंटरिंग व्हाट हैपन विल बी इक्वल।
And I'll draw like this. This is one basic idea. सिंपल लाइक एक्चुअली लाइंस ऑफ फोर्स को भी ड्रॉ करना है उतना टाइम नहीं है मेरे पास सो जस्ट लाइक ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है जो -4 का दिस इज एंटरिंग एंड लिविंग सो नेट फ्लक्स इज जीरो इट इज एंटरिंग एंड लिविंग 3Q का एंटर हो रहा है और लीव हो रहा है सो देयरफॉर द नेट फ्लक्स ड्यू टू 3Q एंड -4 विल बी जीरो एंड व्हाट ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स विल बी देयर ओनली ड्यू टू द 5Q ड्यू टू 5Q विल बी लाइक दिस नेट नेट क्या हो रहा है लाइक इट इज very simple. A -2Q का सब lines of force they are entering. For plus Q charge they are leaving and plus 5Q का भी leave हो रहा है. So therefore those lines of force which are entering, for them what will happen will take flux negative. Those lines of force which are leaving, the lines of force they are taken as positive. Like this, the basic idea of the flux is coming. So if you take the 3Q का charge, इसका lines of force entering and leaving. -4Q का यहाँ पे enter होके यहाँ पे leave हो रहा है. So therefore, like this, what we say that the net flux contributed by -4Q and 3Q will be zero. Flux due to all charges will be non-zero, but net flux will be only due to charges enclosed. Simple. अगर आपको concept याद है या नहीं है, बाकी सब छोड़ दो. जो भी चार्जेस अंदर है वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करते हैं. दिस आइडिया. Now we take the next question. With the center of offering of radius r and linear charge density, the potential is potential of the ring के बारे में पूछ रहे हैं. अगर फॉर्मूला याद रहे तो फाइन गुड. एट द सेंटर ऑफ हाफ ऑफ द रिंग, आधा रिंग ड्रॉ करेंगे. This is the ring. This is the charge. Okay, agreed. यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं. So we'll assume some small element theta. इसका एलिमेंट का लेंथ कितना है dl, r angle subtended d theta. Potential at this particular point dvo is equal to k dq by r. K by r. dq equal to lambda into dl. K lambda r. dl is how much? R d theta. Angle subtended by the arc, so this will become k lambda d theta. So this will be 0 to pi. This will become k lambda pi. Now so because value substitute करेंगे pi v. So k का value कितना है? K value will be 1/4 pi epsilon naught. X pi potentially x pi पूछ रहे हैं. k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो k का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught. So 9 into 10 to the power of 9
लैम्डा का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻9 इंटू पाई, 36 पाई वोल्ट। सो वैल्यू ऑफ एक्स कितना, 36। अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो स्टिल मोर गुड। और द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फॉर्मूला तो के क्यू बाई आर है। व्हाट इज क्यू, इक्वल टू लैम्डा इंटू पाई आर। इसका सॉल्व करें तो कितना हुआ, के लैम्डा पाई। अगर आपको फॉर्मूला ए याद रहे तो सीधा इस टेक हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, अगर नहीं याद रहे तो टेक हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रेशन मेथड। देन बेटर रिवाइज ऑल द फॉर्मूलास, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल चार्ज, तो भी उसका फॉर्मूला से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the net electric field at point P along y-axis is 0, then the ratio of Q2 by Q3 is, यहाँ पे net electric field is 0, along y-axis is 0 पूछ रहे हैं। So along y-axis 0 means, ये थोड़ा ये ले लेंगे। So this is the E2, ये वो E3, इसका एंगल θ2 θ3। नेट फील्ड या इट शुड बी 0। 0 के लिए दिस एंगल कितना हुआ, ये θ2। दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला हुआ θ2। नो रिजॉल्व करेंगे। सो नेट फील्ड एट पॉइंट पी शुड बी 0। इसके लिए तो E2 cos θ2 माइनस E3 cos θ3। E2 का वैल्यू कितना है, के Q2 R2, डिस्टेंस हुआ ये R3, के Q2 R3 स्क्वायर cos θ2 वैल्यू कितना है, 4/R2 माइनस E3 का वैल्यू कितना है, के Q3 R³ स्क्वायर cos θ3 will be 4/R3। So इसका वैल्यू के Q2 4/R2 क्यूब 4 के Q3 R3 क्यूब। R2 R3 इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो द नेट फील्ड, ये तो 0 हो, रेशियो पूछ रहे हैं Q2/Q3, ये तो रेशियो हुआ R2/R3 क्यूब। R2 का वैल्यू कितना है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। इसका वैल्यू कितना है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। जस्ट सॉल्व इट, कैलकुलेट करेंगे आप लोग। सो दिस इज अ बेसिक आइडिया। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस 0, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, EPX, इसको रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व दिस, E2 sin थीटा E3 sin थीटा ऐड कर लेंगे। दिस विल बी E2 sin θ2 प्लस E3 sin θ3। सब्स्टिट्यूट कर दो ये वैल्यू, then we'll get the net field at point P along x. This will be non-zero. वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट बेसिक वेक्टर्स। अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर्स याद रहे तो दैट इज इनफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे। हाँ, विल गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया है, 2 i cap 6 j cap 8 k cap by root 6. This is a E bar vector passes through a surface. Surface area 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, एंड उस एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर 2 i cap plus j cap plus k cap. The electric flux for the surface. The vector form of the electric flux. What is the vector form of electric flux is? Flux is equal to E bar dot S bar. क्या क्या? Then S bar का वैल्यू कितना है? 4 2 i cap j cap k cap root 6 से आपको this is a physics formula. Okay, fine. So this is a physics formula. बाद में ये तो वेक्टर अलजेब्रा है ना, डॉट प्रोडक्ट. इसके लिए कॉन्सेप्ट कुछ भी जरूरत नहीं, आपको बेसिक वेक्टर अलजेब्रा पता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं. तो समहाउ आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज गॉस लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लक्स, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर एरिया वेक्टर दिए तो देन व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? ई बार डॉट एस बार. बाकी यहाँ तो दिस अ वेक्टर अलजेब्रा नो. तो देन विल टेक इट रूट सिक्स 4, यहाँ पे 2/3 हुआ. आई डॉट आई, ये दोनों फर्स्ट आई डॉट आई 1, so this will become 4. I dot j 0, I dot k 0, j dot I 0, j dot j. This will be 6. K dot I 0, k dot j 0, k dot k. This will be 8. 3 1 ja 12. 12 volt electric flux. So what they're asking is like a electric flux. Electric flux का value कितना है? Volt per meter into meter square unit. इसका और दूसरा ये जो यूनिट है वोल्ट मीटर. Volt per meter is electric field. Voltmeter is electric flux. Simple. Somehow remember this formula. Then, agla question. Two charged conducting spheres of radii in B are connected to each other by conducting the ratio of charge of two spheres respectively. Age. The ratio of charges of two spheres respectively. The ratio of charges. यहाँ पे जो भी charges है, say Q1, Q2. Is equal to यहाँ पे रेडिया A and इसका रेडिया हुआ B. दोनों कंडक्टर मीन्स राइट आयरन, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर. देन जब ये connected by wire, then their potentials must be equal. What is the potential of sphere A, sphere B? What is the potential of sphere A should be equal to B? The reason, when two conductors are connected by a conducting wire, the potentials must be equal. The reason for that, conductor is an equipotential. One statement is there from electrostatics. Conductor is an equipotential surface. Sure. So we potential of conducting sphere का वैल्यू कितना है? K Q1 by A, K Q2 by B. कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट. अगला क्वेश्चन ले लेंगे.
two identical conductor P and S with charge Q on each repel each other with a force of 16 Newton. So यहाँ पे हमें दो स्पीयर्स हैं. They repel each other with a force कितना, F का वैल्यू कितना, 16 न्यूटन. A third identical uncharged condenser pair are brought in contact with two spheres. The new force of repulsion between P and S. So this is the sphere A to sphere PO. This is a Q. Identical इसका radius same रहेगा. Okay, now this will be, इसका charge कितना है, Q and Q. Separation, let it be X. Now पहले P and uncharged sphere will be brought in contact. So an uncharged one, now इसका charges कितना हुआ, ये तो charge Q था, they are brought in contact. जब they come in contact, what will be the final charge? Will be Q by 2, Q by 2. ये तो sphere P हुआ, PS. Okay, this will be R. जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे P एंड अनचार्ज, और सर लेके ए अनचार्ज क्या है, सर लेके अनचार्ज ए वाला तो अनचार्ज है. कहाँ पे ए बाजू में, यहाँ पे रख दो बस. फाइन, ए तो अनचार्ज है. तो क्या करेंगे नाउ, P एंड R को कांटेक्ट में रख देंगे. सिंस रेडियस इज सेम, so the charge what pen will get divided because they are having same radius. Then अगली बार क्या करेंगे, now this Q by 2 I'll make in contact with the S. थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आए तो इट विल बी वेरी इजी. ए वाला हुआ S, इसका चार्ज कितना है, Q by 2. नो ये दोनों को हम बाजू में लेके कांटेक्ट में रख देंगे. देन जब ये दोनों को हम कांटेक्ट में रखेंगे, व्हाट बी द फाइनल चार्जेस? Will be the final charges. So इसका फाइनल चार्ज हुआ Q by QS और A हुआ QR. फाइनल चार्जेस एक कैलकुलेट करेंगे हम. Q प्लस Q by 2 इक्वल टू QS प्लस QR. दोनों सेम है, 3Q by 2 and QS by A should be equal to QR by A. So therefore QS equal to QR. So 2QS charge. So QS equal to now कितना, 3Q by 4. QR भी 3Q by 4. Now final charge इसका कितना हुआ, और एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. ये QS, इसका चार्ज कितना है, Q चार्ज है, ये P.
इसका वैल्यू कितना है नो 3q/4। इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है एफ डैश एंड एफ डैश। सो एफ डैश का वैल्यू हुआ k/q 3q/4 x square f equal to k/q² x square 3f/4। f का वैल्यू कितना है 12 न्यूटन। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन p एंड s। इसका तो q/2 ना, ए वाला यहाँ पे रहते हैं, नॉट ए वाला। सो दिस विल बी q/2 8 8 to 6 न्यूटन। वेरी गुड प्रॉब्लम। कंडक्टिंग स्पीयर्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आइडिया। All questions easier. Only thing is you should know the basic concept. Next check 3 infinity long charged tin sheets। यहाँ पे हमें 3 conducting sheets या 3 long charged tin sheets are placed। यहाँ पे एक शीट है, बाद में ए वाला, बाद में ए वाला। ओके फाइन। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, यहाँ पे पॉइंट पी में। ओके दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस शीट विल प्रोड्यूस फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ए बी नेगेटिव है, so the electric will be directed towards it. This is a positive, this will produce electric field in this direction, E3 and E3. So resultant field at point P will be given by the formula E1 minus I cap, E2 I cap, E3 I cap। तो E1 का वैल्यू कितना है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 का वैल्यू कितना है 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। E3 का वैल्यू कितना है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिला के दिस विल बी sigma/epsilon naught। विल टेक कॉमन, आई कैप भी कॉमन ले लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड sigma/2 epsilon naught, sigma/2 sigma/epsilon naught। इसका तो वैल्यू 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2, सो 2 sigma/epsilon naught। सिंपल जस्ट वेक्टर सम। सो लाइक ये जो तीन चार्ज शीट्स है कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, दिस विल बी यूजुअली नॉन कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग रहे तो सिग्मा/epsilon naught ले सकते हैं, दिस आर नॉन कंडक्टिंग शीट्स। अगर कंडक्टिंग शीट है तो देन वी डोंट मेंशन चार्ज लाइक दिस, विल मेंशन चार्ज ऑन आइदर साइड। तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। हाउ टू आइडेंटिफाई थिन और नॉन कंडक्टिंग शीट्स मींस अगर ये कंडक्टिंग रहे तो विल मेंशन चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो विल जस्ट नियर बाय शीट विल मेंशन दैट द चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन वन सरफेस। सिंपल आइडियाज, दिस वाज द बेसिक कन्वेंशन व्हाट वी फॉलो इन द बुक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार रिपीट करता हूँ, अगर ये जो कंडक्टिंग रहे तो विल मेंशन चार्ज ऑन बोथ साइड्स। अगर नॉन कंडक्टिंग रहे तो जस्ट यहाँ पे या यहाँ पे जस्ट विल राइट इट द सिग्मा ओनली। दोनों फेस के ऊपर हम चार्ज इंडिकेट करें तो वो कंडक्टिंग है। जस्ट यहाँ पे रखे बीच में अगर चार्ज लिखे तो, या बाजू में चार्ज डेंसिटी दिए तो इट बी नॉन कंडक्टिंग। दिस अ कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ले लेंगे।
This is the electric field due to the conducting sigma is the charge density मीन्स ये जो कंडक्टिंग स्पीयर है इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है. Okay, this is the iron conducting sphere. Electric field at any point on the surface. What is the electric field on the surface of a sphere? KQ by R square. Okay, agreed. Charge density. Sigma is a charge density. Sigma का value कितना है? Q by 4 pi R square. Okay, this is the electric field vector. Simple. Sir, only this is applicable for conducting? No, even for conducting sheet this is applicable. इसका चार्ज यहाँ पे है. What is the electric field due to conducting sheet? It is also equal to sigma by epsilon naught. अगर कौन सा तो charged surface which is of arbitrary shape, look at shape, very arbitrary. अगर यहाँ पे charge रहे तो what is the electric field near by the surface? Electric field nearby surface again sigma by epsilon of any shape also, provided it should be conductor. दूसरा वाला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. The electric field at point P due to electric dipole is E. यहाँ पे कितना है? The electric field vector is E. Then the electric field at point R on equatorial line will be equatorial line at point R. Point R तो यहाँ पे है 2R. यहाँ पे what is the value of the electric field is asking. So यहाँ पे electric field vector, what is the direction of electric field vector? इस तरफ रहेगा. Then on the bisector on equatorial line the value कितना है? K P by 2R whole cube. इसका वैल्यू कितना है? E का वैल्यू 2kp by r cube. Agree this. यहाँ पे हम E dash को we have to replace kp r cube. Kp r cube will become E by 2. So 1 by 2 cube kp r cube. So kp r cube will become E by 2. So 1 by 2 cube into E by 2. This will become E by 2 to power of 4. This will become E by 16. Just on the bisector, on the equatorial line, आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए. Then on the bisector, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए. बस हो गया, फिनिश. इलेक्ट्रिक डायपोल. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. A vehicle carrying inflammable fluid, usually a metallic chains touching the ground to protect tires from catching dirt from the ground. To alert other vehicles, it's a custom to conduct excess charge due to air friction to ground and prevent sparking. I think this is a conceptual thing based on the option 4. So it's based on this option 4 to conduct excess charge due to air friction to ground and prevent sparking. A charge Q is the center of one of the surfaces, the flux linked with the Q. Draw the Q. एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ कर लेंगे.
This is a cube. The charge के पे center of one of the surface of the cube यहाँ पे रख देंगे. The flux linked with the cube. The flux linked with the cube. So we'll assume two surfaces. How much of flux? Half of the lines of force will pass through the ये जो ब्राउन कलर लाइंस है, these are the lines of force. बाकी बचे सो हाफ ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स वो नीचे वाले क्यूब से पास हो जाएंगे. नीचे वाला ब्लू कलर, ब्लू वाला नीचे वाला क्यूब है, ऊपर का क्यूब है येलो है. देन सो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड लाइक नेट फ्लक्स. ऐसा लगे नीचे वाले और से नीचे वाले या ऊपर वाले तो कितना फ्लक्स पास हो रहे हैं. सो व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स मीन समथिंग लाइंस ऑफ फोर्स. यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे देयर आर 100 लाइंस ऑफ फोर्स इज जनरेटेड बाय दिस चार्ज. सर यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है. दिस इज द चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू. इसका चार्ज ग्रीन कलर कर देंगे. ओके फाइन. ये जो 100 लाइंस ऑफ फोर्स जेमिट हो रहा है ऊपर ऊपर like a 50 lines will pass through this cube, remaining बाकी बचे तो 50 lines नीचे वाले क्यूब में. तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब कितना लाइंस पास होते हैं नो, कितने लाइंस पास होते हैं. तो डेफिनेटली वो जो 100 लाइंस, हाफ ऑफ द लाइंस will pass through it. Remaining of what happen will pass through this upper cube. So therefore the flux linking each cube will be how much? Half of the total flux. So Q by 2 epsilon naught. A little bit some question थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है. There is a infinite plane sheet of charge uniform charge density sigma s placed on xy plane. थोड़ा xy plane ड्रॉ कर लेंगे. This is a y axis, x axis, and this is the z axis. In xy plane there is a plane sheet of charge uniform charge density. यहाँ पे assume करें थोड़ा. Let me draw the diagram. It will be easy for you. ये हुआ प्लेन शीट है. इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा एस. An infinite long line charge having uniform linear charge density lambda e placed at z equal to form plane parallel to y axis. Now we'll assume the this will be infinity z equal to 4 meter. The magnitude of then at point 0,02. यहाँ पे मिड पॉइंट पे is asking the ratio of magnitudes of electric field. इसका लाइन चार्ज का लैम्डा ई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई ई. ड्यू टू शीट कितना है? ई एस. रिजल्टेंट फील्ड कैलकुलेट. रेशियो पूछ रहे.
So ES by E. The ratio of magnitude of electric field value due to sheet to that of line charge. Due to sheet having uniform charge density sigma infinite, so इसका value हुआ sigma s by 2 epsilon naught. Due to line charge का value हुआ 2 pi epsilon naught r. So sigma s r by lambda. The ratio of magnitudes. So sigma s, sigma x equal to 2 lambda e. Lambda e सब्स्टिट्यूट करेंगे. सिग्मा इसका वैल्यू कितना 2 लैम्डा ई. सो 2 लैम्डा ई r pi lambda e. So this will be 2r by 2r pi. The ratio of magnitudes. r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू will be 2 मीटर. So 2 into 2 pi 4 pi. pi इसका रीराइट लिखेंगे जैसे pi root 16 by 1. इनका वैल्यू कितना हुआ 16. जस्ट फॉर्मूलास आपको थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि रखना है कि electric field due to line charge lambda by 2 pi f naught r, electric field due to non conducting charge sheet sigma by 2 epsilon naught. अगर ये दो फॉर्मूला याद रहे तो देन क्वेश्चन पढ़ के ये डायग्राम अगर आप खींचे तो देन इट्स लाइक व्हाट इज द डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द line charge should be radially outward, due to the sheet should be perpendicular to it. The sheet is in xy plane, so therefore the electric field due to sheet will be along z axis. See, one very simple, there's nothing there me to explain all these things are just small basic ideas, basic fundamentals. So अगला question. So पढ़ लेंगे. An infinitely long positive charge state that has linear charge density lambda, electron revolves. पहले हम लाइन चार्ज को ड्रॉ कर लेंगे. Infinitely long line charge. There's an infinitely long line charge. यहाँ पे this is the electron. Okay, fine. इसको जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, दिस इज द स्पीड. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे रेडियस यहाँ पे लगा देता हूँ. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पे एक्ट हो रहा है, दिस विल बी एफ. दिस इज लैम्डा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, and electric field due to long line charge will be perpendicular to it. Since the electron, it will experience force opposite to electric field. Fine. Now यहाँ पे centripetal force कौन provide कर रहा है centripetal force? This is electrostatic attractive force. We'll write down the equation. F equal to mv square by r. F equal to minus E by E mv square r. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? लैम्डा 2 पाई एफ नॉट आर एम वी स्क्वायर आर. तो इसका स्पीड कितना हुआ? वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e लैम्डा 2 पाई f naught m. Variation of kinetic energy of electron as a function of radius of circular path from the wire. Kinetic energy का वैल्यू कितना है? mv स्क्वायर बाय 2. डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख देंगे. mv स्क्वायर will become 2e lambda 2 pi f naught m. Electric field का वैल्यू कितना है? mv स्क्वायर बाय 2 डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख देंगे. mv स्क्वायर will become 2e lambda 2 pi f naught m.
E lambda 4 pi epsilon naught. Okay, these are kinetic energy. Then what is the kinetic energy? Constant. So हम एक ग्राफ पिकअप कर लेंगे. The kinetic energy is independent of radius of circular orbit. Very simple. So like what is this? समझ में नहीं आ रहा है. So this is the electric field produced by the long line charge, and the electron is present in the field of this. It explains a force. This force will provide central force, and the electron is moving in circular path. इसका kinetic energy will it depends on radius. How it depends on radius of circular orbit. We are starting from this, from circular motion. Centripetal force is provided by electrostatic attractive force, mv square. What is the electric field due to long line charge? Lambda by 2 pi epsilon naught. So यहाँ पे आपको दो चीज आपको यहाँ पे रिमेंबर करना पड़ता है. एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज. नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट. एनी एक्सटर्नल फोर्स, सेंट्रल फोर्स कैन प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स. अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद रहे तो देन यू कैन मैनेज दिस प्रॉब्लम. Okay, this completes your January shift. Once again, what are the basic ideas of electrostatics? Point charges. पहले इसको पढ़ लो. Field and potential due to point charge. Then immediately, next again, V and E due to all the bodies. Just formula याद रहना चाहिए आपको. Then next electric dipole. Next flux equal to Q in by epsilon naught. उसके बाद में कंडक्टर्स, जो भी कंडक्टर्स का फॉर्मूलास है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग प्लेट, पोटेंशियल्स, कॉन्सेंट्रिक शेल्स, अर्थिड शेल्स. बस इतना इतना रिवाइज कर लो. दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस. Okay, no, next class I'll come with the next another topic. Till then, okay, bye, take care. Thank you all of you. Thanks for great support.